अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है और उनमें से चीज़ें समझना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस टू लर्न समथिंग न्यू, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी बुक्स के बारे में जिन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए इफ़ दे वांट टू क्लियर देयर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्टली, you don't know JS. If you are someone who's looking to clear their fundamentals in JavaScript programming, this is something that you should definitely go for. I can assure you that after reading this book, you won't need to read anything else. You might be able to write your own blog post on this as well. Second, clean code. अगर आप बुरा प्रोग्रामिंग भी करोगे तो भी शायद वो चल जाए, लेकिन इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर विच इज स्केलेबल एंड इट गेट्स मेंटेन प्रॉपर्ली, तो आपको ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर्ड हो। और वो स्ट्रक्चर्ड कोड कैसे लिखा जाता है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, इफ़ यू वांट टू लर्न दैट, दिस इज़ वन बुक दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। Third one is first aid system design. So if you are a programmer with the experience of let's say 2 to 3 years and haven't heard about this concept called design patterns, this is one book that you should definitely go for. When it comes to software development, there are two main things which is essential. First is architectural pattern and second is design patterns. Architectural patterns are something which is at very high level of how your system will look like, and design patterns are something which are at low level of your code and it describes how your data flow will look like. So this is really essential, and if you haven't heard about it and if you want to start, this is one book that you should definitely go for.